यूएस में एक बात जो मैं जूनियर डॉक्टर्स को बताता हूँ कि पाकिस्तान में तो हो सकता है कि आप 2 मिनट लेट आएँ तो एक्सेप्टेबल हो। अमेरिका में अगर आप 2 मिनट लेट आए हैं तो आप 2 मिनट लेट हैं। देयर इज़ नो अदर वे अराउंड इट। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो वीडियो है वो ख़ास तौर पे उन मेडिकल स्टूडेंट्स या जूनियर डॉक्टर्स के लिए है जो कि इंटरनेशनली अपनी ऑब्जर्वरशिप ढूंढ रहे हैं या ऑब्जर्वरशिप करना चाहते हैं। उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उस सिलसिले में मैं अपना भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। लेकिन आज मेरे साथ हैं डॉक्टर तलहा नज़ीर, जिन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस की हैं, सो ही विल शेयर हिज़ ओन एक्सपीरियंस एज़ वेल। एंड जैसे कि जो लोग डॉक्टर्स ऑब्जर्वरशिप करते हैं या करना चाहते हैं, उनको आइडिया भी होगा इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस जिसमें काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है और अगर राइट डायरेक्शन आपको पता हो तो यू कैन ईज़िली गेट द ऑब्जर्वरशिप ऑफ योर चॉइस। So let's welcome Talha with us today. So thank you, Talha, for taking time out. So why not you give us a little overview of your observerships that you have done and give us a little overview of the journey that you have so far. Thank you very much, Dr. Khalid. मेरा नाम तलहा नज़ीर है. I graduated from King Edward Medical University and from last 2 years मैंने बहुत ज़्यादा जगहों पे like observership किया like around 7 to 8 months and some are in clinics, some are in hospital settings and both inpatient and outpatient and everything. Last year I completed an observership with you and yes. अबाउट ऑब्जर्वरशिप कि कैसे ऑब्जर्वरशिप मिलनी चाहिए तो उसके लिए आई थिंक सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी सीवी प्रोफेशनल होनी चाहिए कि आप किसी को रीच आउट कर रहे हो तो आपकी सीवी पढ़ के आप उसको कुछ लगे कि मतलब आप प्रोफेशनल बंदे हो और आप कुछ करना चाहते हो। दूसरी बात यह है कि जब आप ईमेल करते हो किसी को या email is the best way, but some people don't mind if you reach out through LinkedIn. That's it. No other platform because LinkedIn is another professional platform. Facebook is a no-go and Twitter is a no-go. So yes, that's it. तो जब आप मैसेज लिखते हो या ईमेल लिखते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल देम व्हाई डू यू वांट टू डू ऑब्जर्वरशिप विद देम एंड व्हाट डू यू वांट टू अचीव। आई थिंक अगर आप 2 पैराग्राफ में 3 पैराग्राफ में एक छोटी सी ईमेल लिख के और अपनी सीवी अटैच करते हो और दैट्स प्रोफेशनल वे टू रीच आउट। और अगर आपको जवाब नहीं आता तो डोंट सेंड फॉलो अप विद इन अ डे और टू, वेट फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स। तो आई थिंक ट्राई अगेन एंड अगेन एंड आई होप यू हर किसी को कुछ ना कुछ मिल जाता है इंशाल्लाह। No, great to know. Thank you so much, Tala. So इसमें important चीज जो है junior doctors के लिए एक तो ये कि what kind of setting you are looking for. Are you looking for an outpatient setting or inpatient setting or a combination of both? Naturally, which would be in a perfect or ideal situation. लेकिन उसमें ज्यादा important चीज ये है कि what kind of specialty or you are looking for, how you want to see yourself in future. So usually early career stage पे या immediately after MBBS or MD, students don't have that idea, खास तौर पे developing countries में. In developed countries, they usually have this discussion during the first year, second year, so those students are much more oriented in terms of what kind of specialty want to do in future, and naturally उसी अंदाज से आपका aptitude और direction set हो जाती है। लेकिन जैसे तलहा ने भी बहुत अच्छा बताया कि your CV और curriculum vitae जो है, that is the main document that gonna give you or anyone that idea कि what you are looking for. आपका aptitude क्या है? You are more research oriented. You want to be a clinician in future, or you are into education. इस सिलसिले में हमारा एक अलग से वीडियो भी है about the writing up a CV. लेकिन more importantly, I do see some even consultant level doctors. They write down a CV and it looks like a snapshot. CV is not a snapshot. It should be detailed. It should be oriented about what you have done. और उसमें आप किसी किस्म की मुबालगा राय नहीं करें, सिर्फ वो लिखें जो वाकई है। एंड एक्चुअली सीवी बिल्ड करना बहुत आसान है, आप उस वीडियो में देखिएगा तो आपको आइडिया होगा। लेकिन एक और जो इम्पोर्टेंट बात तलहा ने भी कही और मैं भी उसको दोबारा एंडोर्स करूंगा, वो है रिगार्डिंग कम्युनिकेशन।
So it has to be a professional communication. You are not communicating with your friend कि आप उनको Facebook मैसेज कर दें. You are not communicating with someone you know. आप उनको ट्विटर या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें. It has to be professional and it has to be taken care of professionally as well. जैसे कि developing countries में तो नहीं, लेकिन developed countries में if you get an email, you're supposed to reply back. And most of the time, program directors, secretaries, chairs, they do reply back to their emails. Even they say, no, I cannot facilitate, but they still reply back, which is very important. तो इस चीज को ज़हन में रखिए. तो उसमें ये बहुत जरूरी है कि आप उनको हर 1-2 दिन के बाद ईमेल नहीं करें. Give them some time. Like if I get an email, I usually take few days. अगर मैंने उसी वक्त review कर लिया, great. If I didn't get time, usually it take me 3-4 days before I gonna get back to those emails. Even जो professional emails भी होती हैं. अगर कोई ऐसी email है जिसको urgent reply करने की जरूरत है, तो वो आप कोशिश करते हैं कि आप जल्दी उसको रिप्लाई बैक कर दें. लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट गोना हैपन इन अ वीक और मंथ. तो जैसे मुझसे एक स्टूडेंट ने कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि सर आप मुझे 2 दिन में मेरी पर्सनल स्टेटमेंट रिव्यू करके बता दें. 2 दिन में पर्सनल स्टेटमेंट रिव्यू नहीं होती है. इट टेक्स a lot of time and usually 2 to 4 weeks before you can actually review someone else's document क्योंकि this is not your responsibility. आप एक पर्सनल अच्छे जेस्चर के तौर पे कर रहे हैं. So thank you so much, Tala. So setting is important, communication is important. Your CV should reflect what you are looking for. इस दौरान जैसे आपने भी observerships की, and again there are some observerships which are paid, there are some observerships which are unpaid. So उस लिस्ट में आप क्या बताना चाहोगे? Of course, it depends on your financial situation कि आप कितने मतलब पे कर सकते हो. Even कुछ सेटिंग्स में मैंने ये देखा कि फिजिशियंस डायरेक्टली खुद चार्ज कर रहे होते हैं. तो आई वुड नॉट रिकमेंड दोज कि मतलब फिजिशियंस को आप डायरेक्टली पे करो. दैट वुड इफेक्ट योर LORs एंड एवरीथिंग. सम सिचुएशन में ये होता है कि हॉस्पिटल आपको एक मिनिमम अमाउंट चार्ज कर रहे होते हैं लाइक 500. some hospital charge a lot, but of course it depends कि आप कितने ज़्यादा पे कर सकते हो. इवन एट जैसे मैंने ओशनल हेल्थ में किया तो वो 500 चार्ज करते हैं. क्लीवलैंड 800 चार्ज करता है. आइंस्टाइन लाइक 800 फॉर 2 weeks चार्ज करते हैं. बट फ्री वाले भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल है. तो बेस्ट वे ये होता है कि आप स्टार्ट अर्ली. अगर आपने मतलब सितंबर में अप्लाई करना है तो स्टार्ट फ्रॉम जनवरी और फरवरी स्टार्ट रीचिंग आउट. तो आपके पास एक बफर जोन अच्छा खासा होता है. तो आप जितनी ज़्यादा ईमेल्स करोगे, नंबर ऑफ ईमेल्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी के आपको ऑब्जर्वरशिप मिलेगी कि नहीं. और जितना टाइम आपके पास कम होगा तो ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज उतनी कम होती हैं. तो फिर आपको पेड की तरफ जाना पड़ता है क्योंकि आपको एक LOR US बेस्ड LOR चाहिए होते हैं. तो आई थिंक इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है, कोई बंदा नहीं कर सकता. Sure. So, and this is very true. And I think the observership that you have in any academic institution naturally has more value compared to the ones that you do with some individual doctor. Yes, it does have a value, but more importantly, it has to be something standard. So they should give you a real LOR, जो कि एज प्रोग्राम डायरेक्टर आप देखते हैं. और ये मैंने कई दफ़ा इन डिस्कशंस का भी मैं हिस्सा रहा हूँ जहाँ पे एक जेनेरिक LOR लिख दिया जाता है. ठीक है. So but that LOR should reflect about your work with the doctor for that period of time कि उस दौरान क्या हुआ, आपने क्या अच्छा किया. Usually nobody writes down or try to write down any bad thing about you, but they should highlight the important things about you. Again, nobody is perfect, but try to be the best of yourself. That's what I usually tell students. Okay, try to be the best of yourself to the patients, to the doctor that you're working with. Like in institutional LORs actually matters more. इस दौरान जैसे आपने भी कहा कि बहुत सारे फ्री ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं. And being in contact with someone who has that idea can give you, okay, so these are some programs जो कि free हैं, आपके लिए आसानी रहेगी उनको अप्लाई करने में, and you can get some facilitation. But again, some of them are not free, and that also depends on your pocket, how much you can pay, and it costs a lot. I call it a transition, and transition costs a lot. So other than that, Talha, what you would like to tell us about your experience in terms of the observerships? एक तो चलो हो गया selection के लिए आपने application किया, आपने programs को select किया, then you work over there.
what kind of experience you have on ground when you were working with different doctors? What do you feel? And again, I will say, don't mention the names because it's more generic. So Okay. just mention the personal experience that you have in certain places. आई आई थिंक कि सेटिंग टू सेटिंग वेरी कर रहा होता है आपका एक्सपीरियंस। अगर आप किसी क्लिनिक में काम कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो क्लिनिक में सम क्लिनिक्स आर वेरी बिजी, सम क्लिनिक्स आर नॉट। और कुछ क्लिनिक्स में मतलब मेजोरिटी ऑफ क्लिनिक्स दे अलाउड हैंड्स ऑन, कि आप हिस्ट्री भी ले रहे हो, प्रेजेंट भी कर रहे हो। समटाइम्स दे आल्सो अलाउ फिजिकल एग्जामिनेशन टू। फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, क्लिनिक का लेटर जो होता है ना, वो थोड़ा सा कम वेटेज रख रहा होता है कि इन द आइज ऑफ प्रोग्राम डायरेक्टर्स। बट वहाँ पे आप सीख बहुत कुछ रहे होते हो, कि आप डायरेक्टली पेशेंट से कम्युनिकेट कर रहे होते हो, हिस्ट्रीज भी ले रहे होते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी हो जाती हैं। और आपका एक किसी और कंट्री से यूएस में ट्रांजिशन बड़ा इजी हो जाता है। तो आई थिंक आपको दोनों सेटिंग्स में काम करना चाहिए, क्लिनिक में भी और किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूट में भी। एंड इन पेशेंट में थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। इन पेशेंट में दे विल नेवर अलाउ यू टू टेक हिस्ट्रीज और एनीथिंग अगर आपकी ऑब्जर्वरशिप है। तो Right. तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल नॉट अलाउ टू यू टू के आप जाके उधर एग्जामिन करो और सब कुछ करो, क्योंकि पेशेंट्स आर सिक और दे डोंट वांट एनी इंटरप्शन। एब्सोल्युटली। तो सो ये इसमें इम्पोर्टेंट चीज, सॉरी आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स के लिए या डॉक्टर्स के लिए ये है कि यू हैव टू नेचुरली, आपने जो पढ़ना था, जो सीखना था, वो आप सीख चुके हैं। मोर इम्पोर्टेंटली व्हेन यू मूव टू अनदर सिस्टम is learning the communication skills, how you can approach those patients, what are the norms, and like hand washing before entering the room and after leaving the room, जो कि नेचुरली पाकिस्तान में तो कॉमन बिल्कुल भी नहीं है। सो देयर आर फ्यू थिंग्स टू फॉलो जो कि यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती हैं बाहर के मुल्कों में। सो नाउ कमिंग टू द पार्ट इन टर्म्स ऑफ नेचुरली, एक तो ऑब्जर्वरशिप हो गई, देन looking around it like accommodation and moving around, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? about accommodation, I think there are a couple of websites like furnishfinders.com. Facebook Marketplace is not a reliable thing, but sometimes you get a suitable place. And also there are a lot of Facebook groups like अपना में आप लोग पोस्ट कर देते हैं, और कोई अगर सीनियर है, कोई उस एरिया में रेजिडेंट्स या उस प्रोग्राम में रेजिडेंट्स हैं, तो वो यूजली अकोमोडेट कर देते हैं। अगर वो नहीं अकोमोडेट कर सकते तो दे कैन टेल यू कि मतलब इस एरिया में आप ये ट्राई कर लो, क्योंकि वो उधर रह रहे होते हैं, तो दे नोज बेटर कि किसी कौन सा एरिया सेफ है और कौन सा नहीं है। स्पेशली फॉर फीमेल्स, तो उनके लिए ट्रैवल भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर वो दूर रह रहे हैं तो। और सेफ्टी ऑफ कोर्स इज अनदर इशू। तो बेस्ट वे इज टू रीच आउट टू पीपल के जो उस एरिया में रह रहे हो। अगर आपको कोई भी रेजिडेंट नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, सम पीपल यूजली डू कि वहाँ पे जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स होते हैं या मस्जिद होती है, तो दे यूजली ईमेल देम कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड मैंने यहाँ पे इस हॉस्पिटल में काम करना है। तो मैनी पीपल गेट अकोमोडेशन फ्रॉम देयर टू। तो Great. आई थिंक रीचिंग आउट टू पीपल इज अ वे। No, I think that is very important, and especially क्योंकि नेचुरली हर शहर में, हर बड़े शहर में भी और छोटे शहर में भी कोई ना कोई आपको मुस्लिम या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट या मुस्लिम या पाकिस्तानी कम्युनिटी मेंबर मिल सकते हैं। ऑल्सो जो हलाल फूड प्लेसेस हैं, बिकॉज आई नो they do also, they themselves offer some space as well, but there are a couple of other options they can guide you about. लेकिन अगर आप अपने मेंटर को या अपने सुपरवाइजर को ये ईमेल्स करना शुरू कर दें कि मुझे आप गाइड करिए, तो नेचुरली it becomes a challenge because there is a lot of time commitment involved and he or she may not have that information. तो जब भी आप अपने सुपरवाइजर को कम्युनिकेट करें, प्लीज बी माइंडफुल ऑफ द टाइम कि उनको हर दफा आपके लिए स्पेशल टाइम निकाल के वो इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करके देनी होगी। जितना आप कम उनको डिस्टर्ब करेंगे नेचुरली, उतना ही ज्यादा आपके लिए ये ना सिर्फ अच्छा एक्सपीरियंस होगा, and also they will be more invested in you in terms of your education, your letter recommendation, जो कि primary purpose है। So I think that's great, and what we can do is that at the end of this lecture we will have a one PowerPoint slide or something जिसमें ये सारे resources जो हैं वो हम थोड़े से लिख देंगे ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, and you can look for more resources.
लेकिन इसके अलावा जैसे अभी तला ने भी मेंशन किया, सो देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस जो कि पहले से ही उस मुल्क में काम कर रही होती हैं, जैसे अपना एक है, इसी तरह यूके में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी होंगी। सो देयर मे बी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनली जो कि फॉरेन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करती हैं इन टर्म्स ऑफ अकोमोडेशन, इन टर्म्स ऑफ लुकिंग फॉर ऑब्जर्वरशिप। लेकिन अगेन इसमें भी आप ये जहन में रखिए कि दे आर डूइंग इट एज ईदर एज पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट मोर इम्पोर्टेंटली अगर उसमें डायरेक्टली डॉक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो देयर इज टाइम कमिटमेंट इन्वॉल्व। सो वो हो सकता है कि जूनियर लेवल पे रेजिडेंसी जो लोग यहाँ कर रहे हैं उनके पास थोड़ा बहुत टाइम हो कि वो आपको फैसिलिटेट कर सकें, लेकिन कंसल्टेंट लेवल पे कमिटमेंट्स बढ़ जाती हैं। सो ये चैलेंज हो जाता है। बट बी केयरफुल अबाउट दिस अगेन कि आप हाउ मच यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर कंसल्टेंट, हाउ मच you are taking time from them, because more importantly they are supposed to help you out in terms of your letter recommendation, your experience and those kind of things. That's great, Tala. I think that is a very very helpful information. इसके अलावा और क्या आप ऐड करना चाहेंगे? आई थिंक एक जो आपको लेटर रिकमेंडेशन चाहिए होता है उसको अप फ्रंट ले लेना बहुत अच्छा होता है, rather than you wait for few months or weeks, क्योंकि उसके बाद आपकी वो जो डिटेल्स हैं वो मध्यम हो जाती हैं। So if somebody is working with me and that person I'm writing down a letter of recommendation 3 months later, उसकी कोई एक आध बात तो शायद मुझे याद हो लेकिन ज्यादा बातें शायद याद ना हो, then you have to write down a generic letter of recommendation. So मेरी बच्चों से यही होगी जूनियर डॉक्टर से कि आप अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इन टाइम ले लें और उस पे टाइम और डेट मेंशन हो कि कब आपने उन डॉक्टर साहब के साथ काम किया है, और ताकि आपके लिए भी एक पीस ऑफ माइंड हो और उनको भी बाद में रिट्रोस्पेक्टिवली सोचना ना पड़े। सो टाइमली अगर आप इस जॉब को हैंडल कर लें तो वो अच्छा होगा। व्हाट डू यू थिंक तला? आई थिंक द बेस्ट वे इज के आप अपने प्रिसेप्टर को बोलें कि आप अभी जब भी आप कर रहे हो लास्ट वीक में आप उनको बोलें कि आप मेरा LOR लिख लें। फॉर एग्जांपल इसमें इश्यू ये होता है कि अगर मैं जनवरी और फरवरी में अगर कोई रोटेशन कर रहा हूँ, मेरी एप्लीकेशन सितंबर में सबमिट होनी है, उसमें ईयर का भी डिफरेंस आ जाता है। फॉर एग्जांपल सम पीपल डू एक्सटर्नशिप ड्यूरिंग देयर फाइनल ईयर मेडिकल स्कूल, तो अगर 2 साल पहले उसने एक्सटर्नशिप किया और 2 साल बाद वो अप्लाई कर रहा है, तो दैट LOR विल बी ओल्ड LOR। तो उसमें ये होता है कि आप अपने मेंटर को बोलें कि मेरा LOR लिख लें एंड सेव इट ऑन सम गूगल ड्राइव और समथिंग, जहाँ पे भी उन्होंने करना है। तो जब टाइम आएगा तो दे विल जस्ट चेंज द डेट ऑफ द राइटिंग ऑफ LOR एंड जस्ट अपलोड इट। तो उनको दोबारा से वो लिखना नहीं पड़ेगा और उनको मतलब चीज़ें मतलब उन्होंने पहले से लिखी हुई हैं, दैट्स इट। लेकिन उस पे टाइम तो वही मेंशन होगा जिस दौरान उन्होंने काम किया है, Yes, yes. 2021 Time, और time, 2022। time, time doesn't change, but the date of the writing of LOR राइट। that will be updated के मतलब अगर मैंने 2024 में फॉर एग्जाम्पल अप्लाई करना और मैंने आपके साथ 2023 में काम किया, तो LOR में ऑफ कोर्स मेंशन होगा कि मैंने 2023 की किस्मत में आपके साथ काम किया। राइट। बट व्हेन दे अपलोड द LOR तो वो डेट उस वक्त अपडेट हो जाती है कि आपने कब सबमिट किया वो LOR। राइट। श्योर। इस दौरान तला आपको मुश्किलात क्या पेश आई हैं जो आप कहना चाहेंगे जूनियर डॉक्टर्स को कि दे शुड बी माइंडफुल अदर देन लुकिंग फॉर द राइट प्लेस, बट दे व्हाट दे शुड बी माइंडफुल ऑफ? कौन सी इश्यूज या कौन सी चीजें उनको दरपेश आ सकती हैं जिनके बारे में उनको केयरफुल होना चाहिए? आई थिंक कमिंग फ्रॉम अनदर कंट्री तो आपको ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा मसले आते हैं कि तो बेस्ट वे ये होता है कि आप मतलब अब जहाँ भी आप रह रहे हो आप अपने काम से काम रखो, आप किसी से ज़्यादा मतलब ऑफ कोर्स यू डोंट नो एनीवन, कि अगर कोई आपसे ज़्यादा बातें कर रहा है या वो आपको इनवाइट कर रहा है या जो भी कर रहा है तो डोंट गो, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कैसा बंदा है और क्या कर रहा है वो। जो जो कॉमन परसेप्शन मतलब पाकिस्तान में होती है कि US इज़ अ वेरी सेफ कंट्री, बट इट्स नॉट। तो आपको अपना ख्याल खुद रखना होता है और आपका कोई उधर जाने वाला भी नहीं होता। तो बेस्ट वे कि आप कहीं रह रहे हो, कहीं पे अकोमोडेशन ली है फॉर एग्जांपल, तो आप उसको अप फ्रंट कम्युनिकेट करो कि मैंने इतने दिन के लिए रहना है और इतने पैसे आपको देने हैं। और इफ़ दे आर आस्किंग फॉर एडवांस और एनीथिंग तो आप उसको कम्युनिकेट करें कि मतलब हाउ विल आई गेट बैक और एनीथिंग। तो यूजली क्या होता है कि जब आप छोड़ के चले जाते हो तो फॉर एग्जांपल मैंने अभी छोड़ा तो ही डिडक्टेड लाइक $50 एक्स्ट्रा। ठीक है, तो आप कुछ लोगों को मसला मतलब पहले से ही फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होती हैं, तो कुछ लोग फिर एडवांस भी बहुत ज़्यादा मांग रहे होते हैं, तो वो मसले आ जाते हैं। और दूसरा सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा इशू होता है। और
तीसरी बात ये कि जब आप हॉस्पिटल में होते हो तो ऑफ कोर्स इवन इन हॉस्पिटल यू शुड बी रिस्पेक्टफुल टॉकिंग टू अदर पीपल जो भी आपसे बात कर रहा है। तो दैट्स अनदर थिंग के मतलब पाकिस्तान में आप डायरेक्टली बात कर लेते हो किसी से तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस ऑफ कल्चर जो आपको थोड़ा सा देखना होता है। आई थिंक दैट्स इट मतलब बी माइंडफुल ऑफ Be एवरीथिंग mindful. अराउंड Now, यू। I think that is the key. Okay, be mindful about all these things. No, I think generally अगर आप सिर्फ इस रूल को फॉलो करें कि कोई आपका जानने वाला नहीं है और कोई आपका दुश्मन भी नहीं है, या so be very upfront. किसी को ना बहुत ज्यादा क्लोज करें, ना ही किसी को बहुत ज्यादा दूर करें. या But be mindful about what you are trying to achieve with all this process. That will be helpful for you. एंड उम्मीद है कि कोई ऐसा मसला नहीं होगा. नेचुरली बॉयज के लिए थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, गर्ल्स के लिए डिफरेंट हो जाता है. सो नोइंग के वहाँ पे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे कौन कौन सी फैमिलीज हैं, कौन कौन से दूसरे कॉलीग्स हैं जो पहले से रह रहे हैं, एंड गेटिंग इन टच विद देम बिफोरहैंड could be helpful in terms of not only accommodation but also where to get the food and how to travel. क्योंकि कुछ cities में public transport अच्छी है, कुछ में transport है ही नहीं. So that becomes another challenge if you're living far. Then how you gonna get to the workplace? And US में एक बात जो मैं जूनियर डॉक्टर्स को बताता हूँ कि पाकिस्तान में तो हो सकता है कि आप 2 मिनट लेट आए तो एक्सेप्टेबल हो. अमेरिका में अगर आप 2 मिनट लेट आए हैं तो आप 2 मिनट लेट हैं. देर इज नो अदर वे अराउंड इट. सो इट्स वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉर एवरीवन. ये सिर्फ जूनियर्स के लिए नहीं है, ये सीनियर्स के लिए भी है. सो एवरीबडी इज देयर बिफोर हैंड and nobody accept any excuses because this is your responsibility to get to your workplace in time. So इन चीजों को जहन में रखिए. And also be truthful in whatever you say, क्योंकि अगर आप supposedly कोई ऐसी डिटेल्स हैं जो हाइड करते हैं, पेशेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है उसका कोई ब्रीच होता है या कोई और इस तरह की बात है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ बिग फेलनी और बिग लीगल इशू इन यूएस. सो अगर कुछ ऐसा है तो इट बिकम्स अ बिग चैलेंज फॉर एनीवन. तो प्लीज इन चीजों के बारे में ख्याल रखिए. अगर आप पेशेंट रिलेटेड डिटेल किसी और से शेयर कर लेते हैं, इट्स अ बिग बिग लीगल इशू इन यूएस. अगर आप सपोजली पेशेंट की रिलेटेड कोई डिटेल है जो हाइड कर लेते हैं और उनके इंफॉर्मेशन प्रॉपरली कन्वे नहीं करते और उससे मरीज का नुकसान हो जाता है, तो ये छोटी छोटी चीजें नहीं हैं, ये बहुत बड़ी चीजें हैं बेसिकली यहाँ पे. तो आपको इन चीजों के बारे में, क्या पेशेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर नहीं करनी है और जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो पास ऑन करनी है. और अगर खुदा ना खास्ता पेशेंट या कोई भी आपके साथ मिसबिहेव करता है, रूडली बिहेव करता है, तो जो आपके इमीडिएट सुपरवाइजर हैं, सीनियर हैं, उनको फौरन बताइए. बिकॉज नो बडी इज सपोज टू मिसबिहेव विद यू इन एनी सेटिंग. खास तौर पे जो एकेडमिक या प्रोफेशनल सेटिंग है उसमें आप किसी के साथ भी मिसबिहेव नहीं कर सकते. वट एवर द कॉन्सिक्वेंसेज आर, वट एवर द सिचुएशन इज, बट यू आर नॉट सपोज टू मिसबिहेव विद एनीवन. सो बी माइंडफुल. अगर आपके साथ कोई मिसबिहेव करता है तो आप आगे से मिसबिहेव नहीं करें. फौरन आप वॉकआउट करके अपने सीनियर को बताइए कि ऐसा है प्लीज, एंड दे विल टेक केयर ऑफ इट. क्योंकि नेचुरली हमेशा सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, खुदा ना खासा कभी किसी के साथ ऐसा हो. तो दे शुड बी केयरफुल अबाउट दिस एंड डू टॉक टू योर senior or major supervisor about the issues that you came across. ग्रेट. तला, इसके अलावा और हमें आप क्या बताना चाहेंगे? I think we have covered everything, but I just want to add a few things के we did talk about CV. तो उस CV में मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि some people use pictures, some people use colors and everything. तो right now there's no need for pictures. First of all, there's no need for color. Just write your experience, where you did it, what is the duration, and what did you learn during that period. सेकंड थिंग मैं ऐड करना चाहूँगा कि ऑब्जर्वरशिप कैसे ढूंढनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईमेल्स. सेकंड, मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. हैविंग अ वेरी गुड मेंटर जो आपके लिए मतलब इन्वेस्टेड अपवर्क और आपके लिए वो मतलब आपके लिए कुछ करना चाहता है. ऑफ कोर्स उसको इतना तंग ना करें, बट इट्स अ गुड थिंग टू हैव. थर्ड थिंग, फॉर पाकिस्तानी पीपल अपना हर साल लाइक observership देता है, तो do apply with them and it's an easy way to get an observership. और third thing के during observership just show your interest, ask questions and try to learn as much as you can.
एंड इसमें एक चीज और, बल्कि थैंक यू सो मच तला, मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आपने भी कहा। एंड मेंटरशिप डजंट मीन कि आप जो आपके सुपरवाइजर हैं या मेंटर हैं आप उनको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करें, क्योंकि अगेन अगर वो डिस्टर्ब होंगे तो नेचुरली इधर वो आपको प्रॉपर एडवाइस नहीं देंगे या वो कहेंगे कि आइंदा मैं आपको मेंटर नहीं करता. So they will be very careful about that part. So be careful about the mentorship concept, क्योंकि ये मैं इसको सादा लफ्जों में कहता हूँ कि ये पीरी मुरीदी वाला मामला होता है. So that person has to very carefully kind of cater you. ये नहीं कि आप एकदम से उठ के, and frankly somebody just said that to me recently कि I want you, I want, I look forward to you as my mentor. This is not like that. It takes time and other person has to accept that I agree to be your mentor. इट्स नॉट दैट कि आप एकदम से खड़े होकर कहें जी मुझे आप बहुत अच्छे इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस एंड ऑल एंड आई वांट यू टू बी माय मेंटर. नहीं, अदर पर्सन हैज टू एक्सेप्ट इट as well to be your mentor. So that is also very important, and it's very close relationship to kind of guide and nurture junior doctors about that. And again अपना बहुत ख्याल रखिए. इन एडवाइस के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होंगी. आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं. वी गोना राइट डाउन दोज रिसोर्सेज फॉर यू, ताकि आपके लिए फ्यूचर में आसानी रहे. And all the best for the match. And I know it's the match season coming up with the interviews. It's tough time for everyone, but time passes soon, inshallah. And Allah से दुआ करिए. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much. तला अपना ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. थैंक यू जज़ाकल्लाह.